Hello everyone, welcome back to the channel. If you're looking for a natural way to reduce dark circles, puffy eyes, and rejuvenate your skin, you are at the right place. So we're gonna be talking about exactly these issues जो कि हर कोई struggle कर रहे हैं, dark circles हो रहे हैं, puffy eyes हैं, इनसे हमने कैसे बचना है और अपनी skin को rejuvenate कैसे रखना है. So let's dive right in. I am talking about the latest and the hottest new trend, the polynucleotides. So let's see, what are polynucleotides and why are they gaining so much attention? What is all this hype about anyways? So polynucleotides hote kya hai? So polynucleotides are actually, they're a powerful biostimulator that enhances your skin to regenerate itself. तो जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर स्किन के अंदर रीजनरेशन की एबिलिटी होगी, योर स्किन इज़ गोइंग टू बी मोर इलास्टिक, विल हैव लेस लाइंस एंड इट विल लुक मच बेटर. So polynucleotide, they work by stimulating your skin's own repair mechanism and boost collagen, improve hydration and reduce inflammation. तो polynucleotide को आप ऐसे सोचें कि this is like a power boost, or you can call it like a energy booster that is going to revive your tired, dull-looking skin and make them more firm, smooth, and radiant. So let's see. Do you know what really causes dark circles and under-eye puffiness? तो डार्क सर्कल्स और पफिनेस जो होते हैं ना, ये बेसिकली दे आर बिकॉज ऑफ पुअर सर्कुलेशन, डिहाइड्रेशन और लैक ऑफ कोलेजन, या कि कोलेजन का लॉस हो जाए. तो क्या हो सकता है अगर आपकी हाइड्रेशन बॉडी में या कि आपकी स्किन में कम है, डिहाइड्रेटेड लुक है, तो क्या होगा? सो ऑब्वियसली जब मॉइस्चर कम होता है तो एवरीथिंग लुक्स श्रंकन. यू नो, थिंक ऑफ एन एप्पल, फ्रेश एप्पल वर्सेस अ श्रंकन कंप्लीटली ओल्ड एप्पल. ओल्ड एप्पल की स्किन के ऊपर रिंकल्स भी होंगे और वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है. So just like that, a fresh skin, which is hydrated skin, is going to look more plump and more fresh. And another factor is microcirculation. Microcirculation का मतलब क्या हुआ? यानी कि आपकी जो बहुत ही बारीक शरियानें होती हैं, जिनको कि हम कैपिलरीज कहते हैं. So what kind of blood it is actually giving your skin? So when the microcirculation is not good, उसकी सूरत में क्या होगा कि डार्क सर्कल्स होने शुरू हो जाते हैं, पफिनेस होनी शुरू हो जाती है, बॉडी प्रॉपर्ली जो फ्लूइड इकट्ठा होता है उसको वापस नहीं लेके जाती. सो polynucleotides can not only improve the hydration but boost microcirculation. तो ये दो चीज़ें जब improve होने के साथ साथ automatically the third step happens, which is the repair and the strengthening of the skin. So the polynucleotides can stimulate your fibroblast to restore collagen. तो फाइब्रोब्लास्ट ऐसे सेल्स होते हैं जो कि आपकी कोलेजन बनाते हैं, इलास्टिसिटी बेहतर करते हैं. सो रिजल्ट इज गोइंग टू बी नेचुरल. योर आईज आर गोइंग टू लुक ब्राइटर एंड फर्मर ओवर टाइम. तो इसमें और फिलर्स में क्या फ़र्क है? यू नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यूजुअली कम्स अप. तो जो फिलर है, फिलर बेसिकली एज द वर्ड सेज, फिलर इज गोइंग टू फिल अप अ स्पेस. In dark circles, fillers are effective, but say that if you're not looking to do a filler, polynucleotides will not actually add volume, but polynucleotides naturally over time will repair and rejuvenate the skin, and which is why a lot of people are now moving to a polynucleotide solution instead of a dermal filler. So make sure that, you know, if you're looking for a long-term solution, polynucleotides are an excellent way to start. And now the question is, how do you actually use polynucleotides? So polynucleotides is going to be a procedure. You'll go and see a doctor like myself or another expert who knows about it, and also they know how to basically administer it. तो इसके injections भी लग सकते हैं, microneedling भी हो सकती है. You know, there are many different ways to use polynucleotides. And generally speaking, it doesn't take too long. 10-15 minutes, you are done. Very minimal swelling, if any. और कुछ घंटों के अंदर अंदर बिल्कुल ऐसे ही होगा कि बेसिकली आपने कुछ नहीं कराया हुआ, राइट? मगर इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की बात ये है कि डर्मल फिलर जो होते हैं, दे प्रोड्यूस एन इमीडिएट इफेक्ट. इफ़ यू लुकिंग फॉर समथिंग क्विक that you can just, you know, you come in and you go and you immediately see a change, dermal filler will do that for you. However, if you're looking for a natural rejuvenation, if you're looking for something that will help you make your own collagen, boost your own elastin, then polynucleotides can do that for you. They will gradually make your skin better by regenerating the cells, and over a period of 4 to 6 weeks, your slowly start to become better looking skin. You will have
less wrinkles, more hydrated skin, better circulation, lesser dark circles, and lesser puffiness. मगर याद रखें, it is not a magic to do at one time. You need to do a session possibly 2 to 3 times, space them in about a few weeks apart. So polynucleotides is a game changer in the skin rejuvenation. It is a great option for looking great with long-lasting results and a long-lasting glow, no dark circles, no puffy eyes, no tired skin, and you're ready to go for months. You should try it out.